Welcome to our channel Science Concept. RRB को आखि आगे रखी मु कुनाल ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି 1800 ପ୍ଲସ୍ ଫିଜିକ୍ସ ୱାନ୍ ଲାଇନର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ର ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ହୁ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ? କିଏ ନା ହେଉଛି ଗାଲିଲିଓ ଗାଲିଲି। ଦ chosen standard used for measuring physical quantity is called unit। कौन कुआଯାଏ ना होची unit कुआଯାଏ। The MKS and CGS system are called कौन ना होची metric और decimal system। ताले MKS रो फुल फॉर्म होची मीटर किलोग्राम सेकेंड और CGS रो होची सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS system is also called Gaussian system। The first country to adopt metric system was किए फास्ट କରିଥିଲେ ना होची फ्रांस। The APS system is also called तो प्रथमे APS system को देश କରିଥିଲେ ना ना सॉरी APS system को कौन कुआ जाए ना होची ब्रिटिश system कुआ जाए। तो APS रो फुल फॉर्म होची कौन फुट पाउंड सेकेंड। The fundamental units in SI system are the same as that of MK system। ताले SI system का सहित समान ना होची MK system। ताले नंबर ऑफ बेसिक SI यूनिट्स आर ताले टोटल होची हमर केतरा बेसिक यूनिट रोची SI रे ना होची 7 नंबर्स। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टाइम? सेकंड। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट रो होची कोन ना होची एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर? केल्विन। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी? आंसर होची कैंडेला। 15 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? मोल। नंबर ऑफ सप्लीमेंटरी SI यूनिट आर 2। टोटल केतरा सप्लीमेंटरी रहउची ना होची दीटा गोटे होची रेडियन रुए आ गोटे होची स्टेरेडियन। तो रेडियन होची कार एंगल ना हो जो सॉरी रेडियन कार यूनिट ना होची प्लेन एंगल और स्टेरेडियन होची सॉलिड एंगल। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। ताला होची स्केलर क्वांटिटी होची कोन ना होची जार ओनली मैग्नीट्यूड रहइबो डायरेक्शन रहिबो नाही ताकू हमें कोन कहबा स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल रहिला स्केलर क्वांटिटी रो कोन डिस्टेंस मास स्पीड वॉल्यूम वर्क टाइम पावर एनर्जी प्रेशर एटसेट्रा। तार फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction and which obey the triangular law of addition are called vector quantity। ताल ठीक अछि वेक्टर क्वांटिटी रे कोन ना होची both magnitude and direction रहइबो। एग्जांपल्स तार रहउची डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स मोमेंटम वेट टॉर्क इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। वेट होची कोन ना W is equal to mg। The study of motion of object is called kinematics। The total length of the path traveled by a body in a particular time interval is called distance। ठीक अछि ताले डिस्टेंस रो यूनिट कोन रहइबो मीटर। तापर आसला डिस्प्लेसमेंट होची कोन ना द चेंज इन पोजीशन of the body of a certain distance sorry of certain direction is known as displacement। ताल डिस्प्लेसमेंट होची कोन ना द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दीटा पॉइंट्स भीतर जति डिस्टेंस टा शॉर्ट हबो ताल सेटा हमें कोन कहबा ना होची धर एग्जांपल हमें जति नबा तो कोन हैला एडा गोटे पॉइंट एडा गोटे पॉइंट ठीक अछि एई पॉइंट को हमें जति सीधा जॉइन करिबा ताले एडा होची शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हेगला। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कोन कुआ जिवो ना होची डिस्प्लेसमेंट कुआ जिवो। ठीक अछि कोन कुआ जिवो डिस्प्लेसमेंट।
Next question ଆସିଲା, what is the unit of displacement? Displacement ର unit କ'ଣ ନା ହଉଛି meter. The rate of change of position of the object in any direction is called speed of object. ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? Speed of object କୁହାଯିବ. 29 question, the rate of change of velocity is called କ'ଣ? The rate of change of velocity ହେଇଯିବ acceleration ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ the rate of change of displacement of the body is called କ'ଣ ହେଲା? Velocity। ତାହେଲେ 29 number question ହେଉଛି କ'ଣ? The rate of change of displacement of the body is called velocity. A bus covers the first half of a certain distance with speed v1 and the second half with a speed v2. Then the average speed during the whole journey. তাহলে କ'ଣ ହବ? 2v1 v2 by v1 plus v2. A bus travels for a certain time. Its speed during the first half time is v1 and that during the second half time is v2. The average speed during the whole journey होची केते ना v1 plus v2 by 2. If the body is moving on a circular path, then after completing one complete cycle, its average velocity is 0. ताहले कोन रहइबो? Average velocity केते रहइबो? 0. काइना velocity होची displacement by time. जति गोटे बॉडी टा जदि गोटे बॉडी गोटे सर्कल रे मूव कला, धर मन कर ए पॉइंट टा स्टार्टिंग पॉइंट, से पुणी ए पॉइंट रु गला, पुणी आसी कि सेही पॉइंट रे पहुंचला, ताल तार डिस्प्लेसमेंट केते हबो? डिस्प्लेसमेंट केते हबो? 0। ताले 0 बाय टाइम, 0 बाय टाइम केते हे गेला? 0। ताले कोन हे केते आंसर हे जिवो? 0. If an object covers equal displacement in equal interval of time is called uniform velocity. ताले non uniform velocity कोन हबो? जदि if an object covers unequal displacement in equal intervals of time is called non-uniform velocity. ताकू कौन कुआ जिवो? Non-uniform velocity. 35 number question. The ratio of total displacement to the total time taken is called average velocity. The rate of change of velocity of a body is called acceleration. ताले acceleration कौन होची? Rate of change of velocity बा velocity by time. Velocity by time हे गला कौन ना होची acceleration. ताले velocity by time हे गला, ताले तार unit कौन आसीबो? Velocity रहुची meter per second divided by second. ताले कौन हे गला? Meter per second square. ताले what is the SI unit of acceleration? Meter per second square. ठीक है जी। What is the velocity of a body increase with time, then its acceleration is positive. 39 number question. When the velocity of a body decreases with time, then its acceleration is negative. 40 number question. If velocity of a body decreasing, then the acceleration is called retardation kuhanti ba deceleration kuhanti. 41 number question. What is the acceleration of a body moving with constant velocity? जदि गोटे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी रे मूव कला, ताहले तार एक्सीलरेशन केते हबो ना होजी 0. On applying a constant force to a body, it moves with uniform acceleration. 43 number. A body moves with a constant speed along a curved path. Its acceleration is perpendicular to its velocity. 44 number question. The body is executing free falling motion having equal acceleration. An iron ball and wooden ball of the same radius are released from the same height in a vacuum. The time taken by both of these to reach the ground is exactly equal. 46 number. When two bodies are moving in a straight line, the speed of one with respect to another is known as its
रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी। ताले कौन होची रिलेटिव माने होची गोटे वस्तु को रिलेट करी आउ गोटे वस्तु ताकू कौन कुआ जाए रिलेटिव कुआ जाए। व्हेन ए रॉक थ्रोन straight upward gets to a exact top of its path, its velocity is zero and acceleration is about 10 meter per second square. A body given with an initial velocity moved under the effect of the gravity is called projectile। ठीक है। 49 number question, the path of projectile is parabola। To achieve maximum range of the body should be projected at an angle 45 degree। ताले केते होजी मैक्सिमम केते दूर जाई परिबो केते डिग्री एंगल ले मु जदी गोटे टेकाटा को फोकाडीबी ताले से केते मैक्सिमम दूर जाई परिबो ताले सेटा होजी केते एंगल ना होजी 45 डिग्री। टू अचीव मैक्सिमम हाइट द बॉडी शुड बी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ताले मु केमिति टेकाटा को फोकाडीबी ताले से सबुठारु बेसी हाइट को जीवो ताले केते होजी 90 डिग्री। ए बुलेट फायर from a gun making an angle of 45 degree with the earth surface follows a parabola path। ताले कोन होची जति मु 45 डिग्री करबी ताले कोन हबो parabola path। The motion in which a particle moves along a straight line is called rectilinear motion। कोन कुआ जिवो rectilinear motion। The motion in which a particle moves along a circular path is called circular motion। If an object moves along a circular path with uniform speed, then its motion is called uniform circular motion। Thank you for watching। Like and subscribe करिवे आउ जदि किछि डाउट थिबो आउ क्वेश्चंस हमु कमेंट बॉक्स द्वारा जणाइबे। धन्यवाद।